Hey everyone, this is Ankita and welcome back to Simple Yet Sober, and those who are new here, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get the notification of my videos. Today's video is a makeup tutorial. So many of you have requested me to do a makeup tutorial for beginners. So this is for you guys, and I will show you how I usually achieve this look for a festive or wedding. This is a natural and simple makeup using some simple products, not too much, and also budget friendly. So I am sitting right in front of window because there is a natural light and you guys can see how my skin looks like in a natural light. Before starting this video, I have one good news for you guys. There is a giveaway going on my channel और गिव अवे के विनर्स को मिलेगा अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹300। और मैंने लास्ट वीडियो में ही अनाउंस किया था, अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दोनों के यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे रूल्स मेंशन किए हैं गिव अवे के। सो या डू पार्टिसिपेट, लॉट्स ऑफ लव and all the best. Thank you. Now let's start the video. First of all, I'll use aloe vera gel which is from the brand Mamaearth. So आप कौन सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। और एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और एट द सेम टाइम प्राइमर का भी काम करेगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लिप बाम टू मॉइस्चराइज माई लिप्स टू। Then I'm using foundation from Mabelline Fit Me. I'm in the shade 220 and I love this foundation. If you have oily skin, please go for this. Since from 3 years I'm using this foundation and I am in love with this foundation. I have not tried any other foundation. Just dot it all over your face and neck and just blend it with the help of fingers. I usually prefer ब्यूटी ब्लेंडर और माई फिंगर्स टू ब्लेंड द फाउंडेशन बिकॉज आई फील कि अगर आप फिंगर्स के हेल्प से कर रहे हो तो हीट से अच्छे से ब्लेंड होता है एंड इट जस्ट फिक्स इन टू योर स्किन और फाउंडेशन हिलेगा नहीं, क्रैक भी नहीं होगा। सो ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए इस मेकअप ट्यूटोरियल में, उन सब के नाम और शेड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। So next I'm using this concealer from Maybelline and if you like that highlighted effect, you can take a concealer which is one shade lighter than your skin tone and apply it under your eyes and on bridge of your nose and on chin and little bit on your forehead and just blend it nicely. ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको ये हाईलाइटेड इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। Next I'm using this compact from Lakme. मैं कंसीलर फिक्स करूँगी अपने मेकअप ब्रश की हेल्प से। Then I'll just apply it all over my face. Next I'm using this eyebrow pencil from Blue Heaven and this is completely optional. अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो just skip this step. I don't do eyebrows, so I prefer using this. Next I'm using this contour palette from Sugar और contouring is very important क्योंकि foundation से पूरा एक plain platform हो जाता है और just to give the shape to your face, contouring is important. थोड़ा सा jaw line भी मैं लगाऊंगी so you know to look your face a bit slimmer. And then I'll contour my nose. तो नोज़ के लिए आई प्रेफर फिंगर टिप्स, तो फिंगर से मैं कंट्रोल करती हूँ मेरे नोज़ जस्ट द वे आई हैव शोन इन द वीडियो। देन आई विल टेक अ हाइलाइटर एंड हाईलाइट माय नोज़ अ बिट, फोरहेड पे थोड़ा सा और चिन पे जस्ट टू हाईलाइट माय फेस और चीक बोन्स पे। उसके बाद आई विल अप्लाई ब्लश ऑन माय चीक बोन्स और आई फील ब्लश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ब्लश यूज़ करना। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड। सो आई विल टेक दिस ट्रांजिशन शेड एंड अप्लाई इट ऑन माई क्रीज लाइन and then I'll
take this dark brown color and apply it just at the edge of my eyes, corner of my eyes, and just blend it inside as well. Then I'll take this lighter shade and apply it on my eyelid. And then I'll just take my brush and spray some water and take this glitter golden eyeshadow, और ताकि ये eyeshadow गिरे ना, क्योंकि glitter वाला usually गिर जाता है. So I'll again apply it on my eyelid. Take this lighter shade again and apply it on my brow bone. Then I'll take this transition shade again and I'll apply just under my waterline. Next I'll apply a Kajal, and I'm using Plum Nature Studio Kajal, and again it's my favorite Kajal. Next I'll apply eyeliner, which is from Colorbar. I like to curl my eyelashes, but you can completely skip this step, it is completely optional. And then I'll apply my mascara, so it will give that illusion of a bigger eyelashes. So I prefer using this eyelash curler, and then I apply my mascara. I have just added a bindi and some jewelry and tied my hair up to create a messy bun. And yeah, my festive look is ready. Please hit the like button and comment below if you like this makeup look, and I will come up with more such makeup looks ahead on my channel. So yeah, till then, goodbye and see you in the next video.